experiences. We, Akanksha Sahadev and Jessica, welcome you all to this Young Mind Movement workshop. With the support and guidance of our Honorable Chancellor, Professor Dr. Vikram Singh Sir, respected Vice Chancellor, Professor Dr. Uma Bhardwaj Ma'am, respected Registrar, Professor Dr. Mukesh Parashar Sir, and Professor Dr. Gagan Tiwari Sir, and our esteemed HOD, Dr. Varun Kumar Sharma Sir, and our faculty members. Now, we would like to request Professor Dr. Gagan Tiwari Sir to welcome Sakshi Shree ji on the stage to enlighten us. A single lamp can light up the darkest room just like a hope Can illuminate our lives. With this, we move forward to the lamp lighting ceremony. We are delighted to welcome Sakshi Shree ji, who is a renowned, world-renowned mystic, enlightened spiritual master with over 40 years of intense research and experience in guiding seekers on the path of designing their destiny. He is based in Gada, Delhi NCR. He is a former Indian civil servant who has founded the Science Divine Foundation and spearheading the Young Mind movement. Now, I would like to hand over the stage to Sakshi Shree ji. So, very good afternoon, everybody.
Whenever I happen to be in a gathering of young minds, I really feel sincerely overjoyed. And that is what I am feeling at this moment too. And it is largely because the youth is that stage of life where you are passing through a process of growth. And youth is someone who is overflowing with energy and enthusiasm and an earnest desire of seeking, finding, and learning. So this is a time that these energies which are specifically within you can be utilized for bringing about a great transformation in your life, so that there can be optimum unleashing of your hidden potential. Through our education system, we are bombarding a lot of information into your minds, and there are so much of expectations that you have to do so much in so little a time, and the side effect is tremendously disastrous for all of you, because the potential which is hidden within you remains unlocked, and it remains unlocked throughout the whole life. This is the most appropriate phase of your life, when, if you can sincerely devote yourself to understand science of unlocking your potential, you can achieve extraordinary success in your academic and competitive exams, as well as your life can be joyful from within. And I have to tell you, if you miss this extraordinary opportunity of being a youth, throughout your whole life you will find that your life has become miserable, and all limitations of general people's life will be a part of your life and living also. Therefore, I have my heartfelt invitation to you: be with me for 1 hour, and I have to tell you that there are 3 dimensions of your life. The first is body, the second is mind, and the third is, yes, the third is soul. And you will be surprised that we happen to understand that everybody is living with a body, with mind, and with soul. But the scientists of the inner have been saying that very few people live at the level of their soul. Very rarely. Once in centuries there is a Buddha, there is a Mahavira, there is a Krishna, there is a Christ. Once in several centuries, there have been persons who could experience their souls, and they could live at their level, at the level of their energies or the soul. And there are majority of the people who live only at the level of body. If you live at the level of body only, at the physiological level, then you are no more than an animal. Your life remains limited only to 2 things. One is hunger. Throughout the whole life, people who are living at the physiological level, they are busy
only in having pleasures in satisfying their hunger, or secondly, they are feeling fulfilled by fulfillment of their desire of sex. So hunger and sex, these are the animalistic levels. If we remain confined to our physiological level, we remain confined to the life and living of animals only, and you will be surprised to know that even in the 21st century, 85% of our population is living at the physiological level. They have no concerns beyond that. Throughout the whole life, whatever they may be doing, but they are confined only to the limitations of the body. The second comes the level of mind. If you are capable of living at the level of mind, then a few beautiful dimensions open up in your life. The dimension of science comes up. The mind, intelligence, all these things become involved. The dimension of art, literature, painting, dance, music, drama, these also open up if you start living at the level of mind. So, very few people are fortunate. Hopefully, all of you at least are capable of living, working, and planning your life at the levels of higher intelligence. That's what we call the upper strata of the mental faculty being put in use. But even if we remain confined to the fulfilling of the requirements of your brain and emotions, we will never be able to rest in peace. A modern world, fully developed intellectually, and also developing civilization and culture and all kinds of arts. See the great disaster. We are doomed to fight battles and wars even in 21st century. You say the way Russia, Ukraine, Palestinians, Iranians, and the way the superpowers have engaged themselves into this disastrous warfare. Any time the whole humanity can be put to an end. So I have to tell you one thing very important. A great revolution happened in the evolution of man when monkeys started walking on the earth. What happened when monkeys started walking on the earth? A new dimension came into man's life, that was the mind. Yes or no? Before that, as long as monkey was not walking on the earth on two legs, he was only an animal and he had no mind. When monkey started moving on the earth with two legs, the mind came. One more dimension, the dimension of psychology came in. And the most significant point which I want to convey at this here, now a greater revolution is on the way, and that is another dimension is ready to open up, and for this only young minds can play the vital role. What is that dimension? That is the dimension of the soul coming in. Now,
the humanity has become mature enough and the science of the inner has been developed to that extent that the youth, if they can start living consciously with a sense of awareness towards their own inner development, you can manage to experience your life at the level of your consciousness, at the level of your soul. Mahavir, Buddha, Krishna, Christ had been very rare phenomena on this earth. But now the greater revolution can be heralded with your help, with your understanding of the inner dimensions of your life, and humanity through you can start living by their souls. You can experience your life and living based on the experiences of your soul. And that is what I am trying to work out through the Young Mind movement. Only you can be the torch bearers of this great revolution. Otherwise, I have to tell you, this humanity is moving towards a global suicide. The humanity will not be saved if the young minds of the planet do not come up and trigger a revolution, a greater revolution of introducing new dimensions in their lives, and that is the dimension of living at the level of their consciousness, at the level of their soul, and that is possible only through expansion of your consciousness. You are living in the most alive times of this planet. No other generation had ever been capable of that dimension. You have got all the luxuries that even the kings and emperors were not capable of enjoying. The ordinary human beings are enjoying. Now, the science of the inner has been developed to the extent that a little attention from your side can bring out a great transformation in your life, and it can become instrumental in changing the face of the whole humanity. How? That is what I am going to talk to you today. I have dedicated most valuable years of my life for trying to explore the science and the secrets of unleashing the limitless potential of the youth. How you can unleash your potential. The scientists, the psychologists, and the scientists of the inner, the spiritualists through the ages, they have been saying that you manage to utilize only 5 to 10% of your intelligence, which you have been endowed with by this nature. The great strength, the great intelligence, the great potential which has come to you by birth, you remain to live with only 5 to 7% of that, and the rest remains dormant, unutilized, and goes wasted. Now the question is how to tap that potential which is hidden within you. As I told you, I have dedicated my whole life in exploring and understanding the science and secrets of unleashing your potential. I have, for your convenience, simplified the whole science in such a way that I have offered it to the whole world in the form of 3 fundamental maxims. I have simplified it to that extent that
every one of you is capable of understanding it, imbibing it, and every one of you can transform your lives in such a dimension that out of you, from your very womb, a new man can be born who is be another replica of Buddha, Krishna, Christ, Lalla, Maitreyi, Gargi, and the enlightened souls who have been a very, very rare phenomena on this planet. All of you have got that potential. A little attention, a little awareness, and your movement in that direction can bring out the great transformation. As I told you, I have offered this science in the form of 3 fundamental maxims. You see, I remember the words of Lord Buddha. He used to say, mind is everything. You become what you think. Your life is nothing but a byproduct of your thoughts. What you think every day, that creates your life. So he says, mind is everything. You become what you think. So the first maxim relates to application of the science of mind power. If you understand the science of mind power and apply it into your life and living, you can become anything that you want to be in your life. You can do anything that you want to do in your life. You can have anything that you want to have in your life. But the second thing which Lord Buddha says, the enlightened being, he said, mind is the root cause of your misery. All the problems, troubles, tensions and turmoils, all the sufferings of your life are the byproduct of your mind. Ramakrishna Paramhansa says, you are bound by the mind, you are freed by the mind. It means mind is the cause of all your troubles also. So the second maxim relates to science of putting aside the mind when it is not needed. That is the science of meditation. So the first maxim is about applying the science of mind power. The second maxim relates to putting aside the mind when not needed through the science of meditation. And if you can master these 2 dimensions of your mind, using the mind and being capable of putting it aside when not needed, then you can master your whole life. You can master your whole destiny. And the third dimension, the third maxim is the science of joyful living. I have to tell you that everybody is born in the form of eternal bliss. Your true nature is that of everlasting joy. But joy happens in your life to be a fiction. Misery is the rule. Everybody is suffering. Everybody is in pain, tension, trouble 24/7. So how to get rid of
the misery and sorrows of life. For that, the third maxim, science of joyful living. So all these three maxims I have offered to you in the form of Science Divine Basic Course, and really available on the Google. You can search and find it for free. It is a 3 and 40 minutes of course. I appeal to you that all of you should go through this course, and once you go through the course, I can promise you a process of instant transformation of your life and living will start simply once you happen to understand what has been conveyed through the three fundamental maxims. Since it is not possible to discuss the whole science here in this small seminar, so I would like to tell you a few fundamental things, but largely it would be better that you go Google it and find out the Science Divine Basic Course, and I have simply to tell you that it will start creating miracles in your life from day one. Just go it, and I am available to you every time, just because I am available here somewhere in Science Divine Foundation at Ghaziabad. Whenever you need me, I will be available to you. So today I will talk to you about the most important dimension of your life, that is about the science of joyful living. And the rest of the maxims you can easily make available on the YouTube and the Google. What is of most fundamental importance for your life is, if you learn the art of living joyfully from moment to moment, that is the most fundamental factor, the most single potent factor which is responsible for manifestation of all your dreams and desires. Whatever you want to achieve in life, if you can learn the art of living joyfully from moment to moment, you will become a magnet. You will start attracting everything that comes as a part of needs, necessities and luxuries of your life. You see, when you are happy and joyful, the scientific studies have revealed that there is an upward movement of your life energy from the base chakra, from the Muladhara chakra, upwards towards your Sahasrara. This upward movement of energy takes you towards experiencing your soul. The more joyful you are, the closer you start becoming to your soul. And the person who is closer to his soul, the closer to your soul you happen to be, more and more intelligence starts growing in you. Your intelligence expands. All your energies, physical, mental, and other faculties of your life become most active, and they start working at their best when you are in a joyful state. That is why it is said that when you are joyful, you become established in your soul. The sages and seers of the ancient times, they made it a device to remain happy and joyful every moment, and through moment to moment joyfulness,
they achieve to experience the state of self-realization. Buddha, Krishna, Christ, the science of the inner, which has been explained in such details in all our scriptures, even in Upanishads, and even the science of Advaita Shankaracharya had given to humanity. The essence is, if you are joyful, you are closer to your soul, you are closer to your being, and being closer to your soul, being closer to your being, connects you to the energy of this existence that we call universe. And that is why it has been said, yam ayam chintayate kamam tam tam prapnoti nishyatam. The Rishi of the Upanishad says, whatever you can think, whatever you can conceive, you can achieve. And single most powerful device is practicing the science of joyful living from moment to moment. And the first fundamental maxim about joyful living is choose to be happy consciously. You see, the basic reason behind choosing consciously to remain happy is mandatory. If you don't choose consciously to remain happy, you will never be able to be happy. Because the most striking truth of life is, the life, this existence is not partial. The existence is the whole. If there are flowers, there are thorns too. Flowers cannot be without thorns, thorns cannot be without flowers. They are together. And the second truth is, your default mode of being is the mode of negativity, the mode of being in a state of sadness and sorrow. By default, you are always in a state of sorrow and sadness. You always go into the mode of negativity. So, if you have to get rid of this default mode, you will have to remain conscious that whatever be the situation, you have to choose the flowers out of the situation. If your focus remains on the flowers in every specific situation, you will be consciously choosing the flowers. What is your present state? At present, you are students, you are trying to prepare for future life. Somebody will try to marry, somebody will try to achieve this, somebody will try to achieve that. Whatever you achieve, as long as you are not achieving that thing, you are saying you are unhappy because you have not achieved it. And once you achieved it, then the same thing becomes the cause of sorrow, cause of misery. Some person came to me and he said, Guruji, once I get married, all my troubles will disappear because the rest of the things I have got. And once he got married, he said, I asked, now you must be feeling happy. He said, no, Guruji, after marriage the life has become hell. As long as you don't have children, you keep coming to gurus and doctors asking for getting a child. And once you get the child, you say,
the burden of children, the burden of family, all this I have to cope with. How can I be happy? By default, you are always unhappy. You always try to find out what is unpleasant in a specific situation. So the only remedy is you must be conscious to focus on the flowers of life in every situation. And if you start focusing on the flowers of life, in due course of time you will find the flowers of your life have started growing. You see, there are flowers, there are thorns, both are there. It is only your focus that determines your reality. Your focus becomes the fact of your life. If your focus is always on the flowers will continue to multiply in your life, and in every situation, if you are alert, aware and conscious, you will get an opportunity to find flowers in your life. So this is the first principle. And the second principle, that is more important. The second principle says, never put conditions to your happiness. Practice unconditional happiness. All of you are prone to say, if this thing happens, I will become happy. First I get the amount of money that I need. Once money comes, I will be happy. Once money comes, I will be happy. You say, if you manage to gain power, if you manage to gain prestige, if your this work is done, if your that work is done, then you will be happy. Here, the greatest fallacy of your mind is displayed. No person on this earth has been ever able to be happy who puts conditions to his happiness. I have simply to say, you become and develop the habit of practicing unconditional happiness. Whatever money, whatever power, whatever prestige, whatsoever you want to achieve, everything will start running towards you. Jesus used to say one thing very important: seek first the kingdom of God, all else shall follow. In other words, first be happy unconditionally, then all else shall follow. और सारी चीजें अपने आप भागती हुई पीछे पीछे आ जाएंगी. People very often ask me, Gurudev, if the cause is there, the effect follows. This is the fundamental rule of science. Yes or no? If the cause is there, effect will follow. They say, if the cause of joy, if the cause of happiness is there, then happiness will come. But if the cause is not there, how will happiness come? And that is your pattern of thinking also. Because you say, science says, if the cause of happiness is, only then the effect will follow. But the science of spirituality has discovered a deeper law than that. And that is, you become unconditionally happy. You produce the effect. The cause shall follow. No doubt, if there is a seed, the tree will follow. But I have to tell you, if you happen to catch hold of a tree
millions and millions of seeds will come to hand automatically. If the cause is there, the effect follows. But if the effect is there, the cause also follows. Now the question arises, which should be first? I have to tell you, creating the effect is in your hands. The cause is not in your hands. Suppose if you happen to get a boy or a girl of your choice, you will be happy. God knows what time it takes. But these scientists of the inner have been saying, you become instantly and unconditionally happy and start living unconditionally happy. The type of boy, the type of girl you want to get for your life will start rushing towards you on his own. It is the happiness that attracts your dreams and desires. You are unhappy and you are trying to pursue this dream or that desire, everything will fail. So, learn the art of living unconditionally happy. Once you can manage it, my guru once asked me, whenever I used to go to him with my complaints, with my problems, he used to read my face that it was overladen with tension and troubles. He said to me, if you can manage to remain happy, I am putting one condition to you. If you can manage to remain happy, I will bless you with getting everything the way you want. I will set your whole life and all your problems will disappear. I said, I am promising you, I will always fulfill this requirement. I will remain happy, whatever it be. But even after 10-15 days trying so hard, I found that it was not practically possible for me. I went back to him with my request, Gurudev, oh, it's failing. I try, but I have been failing. So what is the remedy? He said, I am giving you a very magical remedy. The same remedy I am going to offer you, my friends. He asked me, you do one thing. Even if you are not happy from within, you start acting out being happy. Start pretending that you are happy. And once you start pretending, once you start acting out, right from the early morning you got up from the bed, throughout the day you start saying you are happy because of this thing, you are joyful because of this thing. Today you have done this also, that also, and just start acting out. If you can act it out up to the lunch, after the lunch, it will be impossible for you to become unhappy on any ground. And I have to tell you that this is a magical formula. You try it once and you will find that the flash of energy, of joy will encircle you. And with a little practice for about a week or so, it will become difficult to be unhappy, even if you start acting out. Now, one more thing associated with this acting out happiness is very important. People ask me, if you are not happy from within and you are acting out to be happy, you are pretending to be happy, it would be simply artificial. It won't have any inner
strength. You don't have any energy into it. Here I have to tell you a very powerful secret of my experience, and that is, whatever you do, do it with totality. Let this acting of being happy become a total act. Put all your energy into it. Put all your energy into it in such a way that the really joyful person may feel little before you. He may find himself to be a dwarf. You act it out in such a powerful manner. The totality of your act will transform this acting into reality. It is the principle of this existence. Whatever you do with totality, that totality transforms the act into reality. My Gurudev told me, if you learn this art, you can become a king without kingdoms. But what you have to do, you will have to act with such totality that the real king before you appears to be artificial and you appear to be the real king. Do it with totality. Even this principle applies even to your normal daily life activities also. Whatever activity you are doing, if you are doing with totality, it will be transformed into a reality. It is a magical formula which I have given you. Practice it and see the magic. You see, there is a story in Jesus' life that he transformed water into wine. It is scientifically proven that water cannot be transformed into wine, and that is the truth. You can drink water with such great joy and involvement that the water may start giving the taste of the wine. That is what would have been the meaning of that story. Now 3 more principles I will tell you in 2 minutes each. The third principle is never postpone your happiness, because you can be happy right now or never. This is the fundamental principle about happiness. You can have it only in the present. But nobody ever tries to be happy in the present. Everybody is planning some great event to happen in future, so that after that event he will be able to enjoy the after effect of the event and he will be happy. And that is why your mind always puts you into the future and it takes you away from the present. And the truth of life is that happiness can be enjoyed either right now, right here in the present, or never. So if you want to be happy, learn to be happy the moment where you are. Never in future. You will never get in future. Happiness is always available in the present, but you are never in the present. Once you learn the art of remaining in the present,
you will be able to experience happiness every moment of your life. All your energy is involved either in the worries of the future or in the tensions of born out of the past. When all your energy is withdrawn from the past and all your energy is withdrawn from the future, a tremendous explosion of energy happens inside you. That explosion of energy is called happiness, that is called joy, that is called godliness. So learn to live in the present, because happiness can be enjoyed in the present or it can be enjoyed never. And the fourth principle I have to tell you, happiness and unhappiness, joy and sorrow, they are parts of the same coin. If one comes, the other cannot remain behind. They come into your life as parts of the same coin. So, the science of the inner says, always adopt an attitude of being a witness to whatever happens in life. Everything in this existence is happening on its own. You are not the doer, you are simply the seer. Your status is in this existence is that of a seer. That is why Lord Krishna says, Sukhe dukhe samo bhutva labha labho jaya jev. You develop an attitude of being a witness. When joy comes, stand at a distance and see that it has come and this too shall pass. When misery comes, stand at a distance and observe it without judgment and keep in mind this too shall pass. They come, they go. You remain a watcher. This is the only sadhana which has been termed as living in a state of being an observer without judgment, living as a Sakshi. Once you start living as a Sakshi, a great revolution happens inside you and everything will continue happening and you will be enjoying your blissful state. How is it possible? If you go to that basic course and you go into the details, I have scientifically analyzed and presented all the pros and cons and how you can make it livable, practicable steps. So that I leave you for your interest, and once you will practice it, you will go through the course in detail, you will be able to absorb it. Now, in brief, I have given you the basic principles of science of joyful living. Now I will take you to the practice of a meditation, mind power meditation. I will ask you to practice this for 15 minutes with me. This meditation is very powerful because it combines all the three maxims. It is a practical application of applying the science of mind power, the science of joyful living, and also the science of meditation. All the three are involved in this device of meditation, that is mind power meditation. So, I hope you are ready to practice this meditation for 15-20 minutes. Yes? Okay. So, there are four steps in this meditation. This meditation is primarily for manifestation of all your dreams and desires into reality.
You must be having any kind of dreams, any kind of desires, and if you want to materialize them in actuality, this mind power meditation can work as a powerful tool. The first step of this meditation is simply fast and deep breathing. For 2 to 3 minutes, you have to go for breathing fast and deep, fast and deep, fast and deep, fast and deep. I am simply displaying you once. For 2 minutes in the first step, go for fast and deep breathing. It is a device of hyper oxygenation. Once you go for hyper oxygenation through fast and deep breathing, your whole body energy gets electrified, and from within there is an explosion of energy which takes you deeper into states of meditation. And the second step, please, just for 10 minutes, observe silence. Try to understand something very vital for your lives. The second step is intense humming for 7 times. In this step, we start humming like a bee. Just I am displaying you once, which you have to practice for 7 times only. This is a powerful tool. I know the practice of mind power meditation can be a powerful device for manifestation of your career dreams and other life dreams. And you can experience miracles in your life with the practice of this meditation. So, once I am displaying how to go for this intense humming. I have to close my eyes, you have to close your eyes. Not now, when you will do. And with eyes closed, I have to inhale fully and then to start humming like a bee. This is one time like it, you have to do it for 7 times. And the third step is third eye meditation. This is that device which was given to Pythagoras when he went to join the university, and he was given the task of practicing this third eye meditation for 40 days, and then he was to appear in a test. After that, he would be able to get admitted, and Pythagoras has written in his memoirs that this practice of third eye meditation for 40 days transformed my whole life, and had I not practiced that third eye meditation for entry into the university, a Pythagoras as a scientist, as a mathematician, which the word received, would not have been born within me. So this is such a powerful device. You being students working to unleash your potential, this third eye meditation, every one of you is expected to practice it for 10 minutes through this mind power meditation. You just practice it for 40 days and say the miracle with which you manifest your desires, the way you manifest everything around your life, and it will also lead you towards explosion of intelligence within you, your power of memory, your power of creativity, your power of confidence will grow by many times. So in third eye, you have to practice, you have to close your eyes, and with eyes closed, you have to watch the midpoint between the eyebrows.
with your head slightly upturned. You see, just I am sitting with my eyes closed, my head being slightly upturned, and with eyes closed, I have to watch between, on the midpoint between the eyebrows, somewhere here, where the tika is placed. So, this third eye meditation, आप लोगों में से somebody has ever practiced third eye meditation? If somebody has practiced, please raise your hand. No. No one has ever practiced. Please do practice it. It will transform your life. And the fourth and final step is you have to visualize. You have to make mental pictures of what you want to achieve as if you have already achieved it. And that too with a feeling of joy. You take up one wish of yours, the most important wish of your life, you take it right now, select it, choose it. And I will take you to practice. I promise if you sincerely practice this meditation in my presence, my life energy will get transmitted into you and it will uplift your energies and you will go deeper into meditation, and this will become a means of manifestation of your dreams and desires in life. So the last step, once again I am explaining, it is you have to visualize one thing that you want most to happen in your life. You have to visualize as if you have already achieved it with a feeling of joy. Have you understood the last step, please? Yes or no? So now I will take you to the practice of mind power meditation. Please, first, now we come to the first step of mind power meditation. Please just be relaxed. Let your whole body be in a state of total relaxation. You are doing nothing physically, you are doing nothing mentally, you are in a state of total relaxation. And please close your eyes. Just please close your eyes. Everybody please close your eyes. Just a little discipline of 15 minutes. Be with me, and nobody will go empty-handed from here, it's my promise. I am going to give you the science of manifestation of your heartiest dreams and desires. So the first thing, close your eyes, and now start breathing fast and deep as I displayed before you. Just for 2 minutes, please breathe. Breathe in and breathe out with force, with energy, not as if you are half dead, half alive. Total silence, please come up. Oh, no energy, not even half alive. Your young minds, youthfulness is your essential ingredient. Please go for breathing fast and deep, fast and deep, fast and deep. Start. Don't hesitate. Why hesitating? You are the fate makers of the nation, and you cannot breathe fast and deep, fast and deep. इसीलिए भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाता है. Oh,
I'm really feeling ashamed of the youth, the whole lot of youth of this country. You cannot breathe in and breathe out. What a great shame. Okay, you might be feeling ashamed of breathing in and breathing out. Now I come to the second step. The second step is intense humming. Please close your eyes. Please close your eyes and inhale deeply and start humming like bees. Beautiful. At least you have made me happy. Now second time. Second time we have to do it 7 times. Second time intense humming like bees. Breathe in, inhale to the full and start humming. Beautiful. Now third time. And now fourth time. And now fifth. And now the last time. Okay. Now we come to the third step. Please keep your eyes closed. This step is largely practiced for 10 minutes, but today here, in view of paucity of time, I will be asking you to practice it for 5 minutes. Please close your eyes and be in a state of total relaxation and focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. Close your eyes and focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. Beautiful. Continue for 5 minutes with eyes closed. And focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. Immense intelligence would be released. Your power of memory, your power of concentration, everything will multiply.
Beautiful. Everybody participating with great discipline. I'm really overjoyed. Once your eyes are closed and you are in a state of silence and in a state of total relaxation, you become a magnet of the whole universe. The cosmic energy starts rushing towards you and starts accumulating into your being at the center. The science of inner is the subtlest of all the things that have come to your experience. Learn to see it with eyes closed for 10 minutes for 40 days and see the miracle that will start happening in your life. You want to achieve all the beauties of this existence and you can't even sit silently with eyes closed. Nothing can be given to you. Until and unless your energies are aligned with the energies of this universe, you cannot become a magnet of attraction of your dreams and desires. First, bring yourself in alignment with the cosmic energy through the state of meditation, through the state of mind power meditation. The first two steps prepare you for meditation. The third step is the state of meditation. And the fourth step is the step of visualization. Now we move to the fourth and final step, that is to be practiced for 5 minutes. Here you have to choose one specific wish of your life, the most important current wish of your life which you want to manifest in your life at the earliest. You take it up in my presence, I am witness to it, my energies will help you in the manifestation of this wish. Simply do it with sincerity. Choose any one of your wish and make mental pictures of having achieved the same. Visualize as if you have already achieved what you wanted to achieve, and you have to feel the joy of having achieved it. So do it for 5 minutes. Keep your eyes closed. It is a simple, intense visualization with intense imagination, and it is the power of imagination which is to be applied while you are practicing visualization. Visualize powerfully as if you have already achieved it. Suppose you wanted to achieve 90% marks in your exams. Feel as if 90% marks have already been awarded to you and you are being congratulated by your professors, by your friends, and you are feeling the joy of having achieved the same.
इस स्टेप में अपनी आकांक्षा को, अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। जैसे जो आप पाना चाहते हैं वह आपको पूरी तरह मिल ही गया है और अब उसके मिल जाने की खुशी महसूस करें। जब आप ऐसा मानसिक चित्र अपने भीतर बनाएंगे तो जो 10 मिनट आपने थर्ड आई मेडिटेशन किया उसमें आपका कॉन्शियस माइंड का कैमरा एक्टिव हो चुका है। अब जो मेंटल पिक्चर आप बनाएंगे वो मेंटल पिक्चर सीधे आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वह आपकी चाह को असलियत में प्रकट करने को विवश हो जाएगा। आपका सब कॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स की शक्तियों से तालमेल रखता है 24/7। उसमें जब भी आपकी चाह पहुंच गई तो आपकी चाह असलियत में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आपकी चाह आपके कॉन्शियस माइंड में ही रह जाती है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंच पाती है। ये डिवाइस आपके कॉन्शियस माइंड की चाह को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देती है और सब कॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अस्तित्व की शक्तियों से 24 घंटे उसका तालमेल रहता है और वह उसे साकार करने के लिए विवश हो जाता है। तो आप इस माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ अपने आप होने लगा है। ऐसे लोग टकराने लगेंगे, ऐसी चीज़ें मिलने लगेंगी, सारी परिस्थितियां ऐसे बनने लगेंगी कि आपको आश्चर्य होगा कि कैसे ये होने लगा है। मैं रोज रोज इस डिवाइस के चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। तमाम सारे मेरे फॉलोअर्स हजारों की संख्या में इसका लाभ ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जितना मैंने कुछ समझाने की चेष्टा की, जितना आप समझ सके हो, अन्यथा आप साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स को जरूर एक बार 2 बार सुन लें। मेरा मानना है कि आपको बहुत बड़ी संपदा उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। ऑलरेडी खुली हुई हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल इन एवरी वे। मैं जब आपको सिखा रहा हूँ कि हर पल आनंदित रहना चाहिए तो आप कैसे, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। मेरा तो आनंद भंग नहीं होता, वो तो एज इट इज़ बना ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि आपका आनंद भी निरंतर बना रहे। अगर आप हर पल आनंदित रहने की कला सीख लेते हैं, मैंने कुछ इशारे दिए आपको पिछले 1-1.5 घंटे में, अगर आप हर पल आनंदित रहने की कला सीख लेते हैं तो मैं वचन देता हूँ, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सप्तसती का ऋषि कहता है कि जो जो आकांक्षा आपके भीतर प्रकट होगी वो साकार होती जाएगी। ये केवल कहने वाली बात नहीं है, ये ऐसा मनुष्य के जीवन में हो सकता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी इस तरह के फूल खिले कि जो भी आपकी चाह आपके भीतर उठे वह साकार होती जाए, साकार होती जाए, साकार होती जाए। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इतनी देर आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, अपनी सारी सीमाओं के बावजूद आपने पूरे मन से, प्राणों से मुझे सुनने समझने की चेष्टा की। इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और
सभी बच्चों के हृदय में या फैकल्टी मेंबर्स किसी के भी भीतर कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो आपके भीतर उठ रहा हो, अब मैं आपके प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। Anyone wants to ask some questions? नमस्कार सर, मेरा नाम चेष्टा भाटी है। आई एम फ्रॉम बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3rd सेमेस्टर। सर जैसे आपने बोला थर्ड आई मेडिटेशन, तो सर मैंने वो कई बार लाइक ट्राई किया है, बट द मोर आई ट्राई टू फोकस द मोर आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। मतलब मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मेरा फोकस एक जगह हो सर, उतना ही माइंड और क्योटिक होता रहता है और डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। मतलब आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स, मॉर्निंग में, इवनिंग में, बट सर वो पीस वाला स्टेट नहीं आ पाता। तो हाउ टू डू दैट? ओके ओके ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर आपने प्रयास किया है तभी आपके सामने समस्या आई है, और जो भी प्रयास करेगा उसके सामने प्रारंभ में यही समस्या आती है। ये शुभ है कि ये समस्या आपके सामने आई है जब जब आपने प्रयास किया है। इस संबंध में 2-3 बातें बुनियादी आपको समझा देना चाहता हूँ। पहली बात, जब आप बेसिक कोर्स को सुनेंगी तो आपको पहली बात माइंड के बारे में यही पता चलेगी कि माइंड 24 घंटे चलायमान रहता है। माइंड किसे कहते हैं? माइंड आपके शरीर का कोई अंग नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं। इट इज द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। जैसे वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, वैसे विचारों के समूह को कहते हैं मन। यानी 24/7 थॉट्स आर रनिंग विद इन यू, और ये हमेशा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसी को तो मन कहते हैं, इसी को माइंड कहते हैं। माइंड का स्वरूप ही है निरंतर चलायमान रहना। अब प्रश्न है कि एज स्टूडेंट्स आपको फोकस करना पड़ता है, चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, तब कहीं आपको सफलता मिल सकती है। और चित्त एकाग्र नहीं होता है, आधे घंटे आप पुस्तक लेके पढ़ते हैं तो आधे घंटे में मुश्किल से कहा जाता है कि 5-7 मिनट ध्यान पड़ता है, बाकी सब डाइवर्ट होता है, फिर बार बार वापस लाते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको आधे घंटे में पढ़ लेनी चाहिए, उस चीज़ को पढ़ने में आपको कभी कभी 2 घंटा लग जाता है, कभी कभी 3 घंटा लग जाता है। यस और नो? सिंपली बिकॉज योर फोकस इज नॉट देयर, सिंपली बिकॉज तुम्हारा माइंड बीच में मोबाइल देखने लगेगा, व्हाट्सएप देखने लगेगा, रील देखने लगेगा, कुछ और करने लगेगा। मैंने आपसे कहा कि आंख बंद कर लें और दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहें। तो प्रयोगों में पाया गया है कि 10 सेकंड भी आपका नहीं होगा कि माइंड आपका आज्ञा चक्र से, मध्य बिंदु से हटके कहीं और चला जाएगा। Within 2-3 seconds your mind gets away। तो इस बालिका ने बहुत सही प्रश्न किया कि गुरुदेव उपाय क्या है? उपाय सिर्फ एक है कि इसको स्वीकार कर लीजिए कि मन बार बार इधर उधर भाग जाता है। आपको क्या करना है? हमने कहा आप देखते रहिए, तो आपको 2-3 मिनट बाद पता चलेगा कि अरे आप तो कहीं और चले गए थे। तो जब आपको पता चले कि कहीं और चले गए थे तो उस समय वापस आ जाओ फिर वहीं पे। डोंट रिपेंट, कोई पश्चाताप ना करो, ना कोई दुख मनाओ कि अरे मेरा तो ध्यान भंग हो गया। कुछ नहीं, ये होगा ही होगा। तो आप 10 मिनट के लिए बैठना है तो 10 मिनट बैठें, नियमित बैठें, हर रोज बैठें। और जब डिस्ट्रैक्शन हो, इधर उधर जाए तो जाने दो, जब होश आए तो फिर ले आओ।
तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार ये भागेगा, लेकिन जब आपको होश आ जाए तो फिर वापस आ जाएं। केवल यही एक सूत्र है, और ऐसा निरंतर करते रहें, बैठना मत छोड़ें, निरंतर करते रहें तो असंभव चीज भी संभव हो जाती है। अगर आप निरंतर करते रहेंगे, 10 मिनट ही तो निकाल रहे, 10 मिनट निरंतर करते रहें तो एक दिन ऐसा होगा कि माइंड वो भागना बंद कर देगा, आप उसको हरा देंगे। यह सूत्र मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि ठीक यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से गीता में पूछा था कि उन्होंने कहा, प्रभु आपने इतना ध्यान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ये सब बताया तो सुनने में तो समझ में आ गया, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाता है। जैसे तू कह रही है कि भागने लगता है मन, यही बात उन्होंने कही। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया तो कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमको इसका समाधान बताता हूं। उन्होंने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अर्जुन तू सिर्फ लगातार 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 अभ्यास कर। लगातार अभ्यास करने से असंभव भी संभव हो जाता है। पानी की क्या मजाल की पत्थर को तोड़ दे, लेकिन झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है। पानी इतना तरल, इतना कोमल, वो चट्टान को तोड़ दे नहीं, लेकिन चट्टानें टूट जाती है। क्यों? क्योंकि निरंतर झरने से झरता हुआ एक एक बूंद टप टप करके गिरता हुआ पानी भी चट्टान को तोड़ देता है एक दिन। जल की धार को तो छोड़ ही दो, धार तो तोड़ ही देती, एक एक बूंद गिरने वाला पानी अगर निरंतर गिरता रहे तो चट्टान को तोड़ देता है। वैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास 10 मिनट का निकाल के करती रहो, ये माइंड, ये मन ऐसा गुलाम हो जाएगा कि जहां लगा दोगी वहीं लग जाएगा। 10 मिनट में आप 10 घंटे की पढ़ाई करने में सक्षम हो जाएंगे। बस इस सूत्र को आत्मसात कर लीजिए प्राणों से। थोड़ा सा तो एक कदम उठाना पड़ता है, कुछ तो अनुशासन के आधार पर ऊर्जा और श्रम करना पड़ता है, तभी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं, और ये आपको हासिल हो जाएगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? Good afternoon, sir. Yeah. Myself, Samvi Verma from BSc Biotechnology first year. Sir, my question is, they say always ki college life is best life. But Yeah. why am I always stressed? Sir, am I doing something wrong? No, no. Oh, very good question. Very innocent question. आपने पूछा है कॉलेज लाइफ को बेस्ट लाइफ कहा जाता है, और फिर कॉलेज लाइफ में मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ, और मेरा तो मानना है तमाम सारे बच्चे, अधिक संख्या में बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं जो कैरियर के प्रति जागरूक हैं, कैरियर के प्रति, भविष्य के प्रति सचेत हैं। उनके ऊपर इतना वर्कलोड है, तमाम सारी चीज़ें हैं, और जिसके कारण वो स्ट्रेस का आना स्वाभाविक। स्ट्रेस आता ही इसलिए है कि आपको लगता है इतने सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और परीक्षाएं भी देनी है, और तमाम सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर पाना संभव नहीं है, हो पाता है। आपने कभी स्ट्रेस का कारण पता करने की कोशिश की है? किस कारण से स्ट्रेस हो रहा है? सर, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स, इधर की टेंशन है। या वेरी गुड। जैसे एक बात बच्ची ने बताया कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली टेंशन्स हैं, वैसे पढ़ाई का बोझ तो है ही, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी
और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर होवरिंग अराउंड यू। अब इन प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ में होंगी। इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ही आपके जीवन में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी पैदा होती है। यस और नो? यस। अब मैं समाधान बताता हूँ। समाधान क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके पास उन प्रॉब्लम्स से निपटने का कोई हथियार है कि नहीं? अस्तित्व ने, परमात्मा ने आपको जिंदगी की प्रॉब्लम से निपटने के कुछ हथियार दिए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिक हथियार है योर बॉडी, दूसरा हथियार है योर माइंड, तीसरा हथियार है योर इमोशंस। तो ये तीन हथियार तो ऐसे हैं जिनको आप रोज अनुभव करते हैं। आपके पास शरीर है, शरीर का उपयोग करना पड़ेगा समस्या का समाधान करने के लिए। कहीं जाना है तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई शरीर से करनी पड़ेगी, किसी से मिलना है तो शरीर को लेके मिलने जाना पड़ेगा। तो बॉडी का यूज करना है आपको। आप जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, ये तीन पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका हार्ट यानी इमोशंस। और बॉडी, हार्ट, इमोशन को ठीक करने के लिए क्या करते हो आप लोग? जैसे मैं इस बच्ची से पूछ रहा हूँ, बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ करती है? नहीं। माइंड को ठीक रखने के लिए कुछ करती हो? नहीं। इमोशंस को ठीक करने के लिए कुछ करती हो? नहीं। तो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम्हें प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का सामना करना है, साधना करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना सबसे पहली आवश्यकता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने का आज तक इस पृथ्वी पर जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय परिष्कृत होकर अंतिम रूप से सामने आया है, ये तीन चीजें हैं, हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए। पहला, शरीर को, माइंड को और इमोशंस को ठीक करने के लिए 1 घंटा व्यायाम जरूरी है। 1 घंटा नहीं कर सकते, कम से कम आधे घंटे व्यायाम करिए और कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करिए। 40 मिनट हो गया, और कम से कम 20 मिनट ध्यान करिए। अगर ये 3 काम आप करते हैं, सम्यक व्यायाम, तो तीनों का व्यायाम आपको आधे घंटे शरीर का व्यायाम 10 मिनट के लिए अपने वाइटल एनर्जी को सही करना प्राणायाम से, और 20 मिनट ध्यान के माध्यम से अपने माइंड को और अपनी इमोशंस को स्वस्थ करना। जो 20 मिनट ध्यान करेगा वो उसके माध्यम से उसका माइंड, उसकी इमोशंस इतना पावरफुल सपोर्ट करती है उसको कि वो अपनी समस्याओं का नहीं, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने लगता है। इसीलिए आपको मैंने आपको 3 महामंत्र दिए हैं। साइंस ऑफ माइंड पावर। माइंड पावर का प्रयोग करके आप जिंदगी में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। ये विचार शक्ति का विज्ञान हर व्यक्ति को, हर बच्चे को समझ लेना चाहिए। इस विचार शक्ति के विज्ञान को आप समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपका माइंड आपका शत्रु है आज की डेट में, वो आपका मित्र बन जाएगा और उसकी सारी शक्तियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और दूसरा मैंने कहा साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने आपको माइंड पावर मेडिटेशन दिया, इसका आप अभ्यास करें तो हर समस्याएं अनेक, समाधान एक। और तीसरा मैंने कहा लर्न द साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग। हर पल आनंदित रहने की कला सीखें।
जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती है, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जिंदगी की समस्याएं जो आपके भीतर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा कर रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए साइंस ऑफ माइंड पावर, साइंस ऑफ मेडिटेशन और साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग का अभ्यास करें। आपके जीवन में क्रांति होगी, आपके जीवन में हर मनचाही चीज पैदा होगी और आप पहले से अनंत गुना शक्तिशाली अनुभव करेंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। जी, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, माय नेम इज सुबोध राघव, बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस। जी सर, सवाल ये था कि जैसे किसी को समझा रहे हो हाँ कि मतलब ये गलत ना करो या फिर ये उल्टा काम ऐसे मत करो, और वो फिर भी ना माने, तो सर क्या करें फिर? अब ये निर्भर करता है कि जिसको आप समझा रहे हैं वो आपका प्रोफेसर है कि आपका फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है सर। क्लोज फ्रेंड है। तो मित्र को आप समझाते हैं कि गलत काम ना करो, उस गलत काम को करने से उसे नुकसान हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है? सर उसका नुकसान है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे ही होगा। एक्चुअली सर महिला मित्र है। मैं उसी पे आ रहा था। तो ऐसा है, महिला मित्र आपको समझाती है, नहीं सर, आपकी उल्टा समझ है। में नहीं आता है, सर तो उल्टा फिर है। आप उसको समझाने लगते हैं। जैसे इस समय आप उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू गलत कर रही है, लेकिन वो समझती है कि वो गलत नहीं कर रही है। वो आपको समझाती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है? तो अब प्रश्न है कि कौन सही है, कौन गलत है? इसके दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प, अगर आप उसको सच्चे अर्थों में प्रेम करते हो तो जैसा वो करना चाहती है करने दो। लेट व्हाट एवर शी इज डूइंग, let her do and enjoy it because she is happy doing it. If you sacrifice your interest for making her happy, she will become overjoyed and then she will start listening to you. और तब वो, जब आप उसकी खुशी में राजी हो जाएंगे, तब धीरे धीरे वो भी आपकी खुशी में राजी होना शुरू हो जाएगी। युद्ध करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं, उसी को जिता दो। जहां प्रेम का संबंध हो वहां खुद को जिताने की जगह अपने प्रेमी या प्रेमिका को जिता देना हमेशा लाभदायक होता है। ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। आप करो, इसके परिणाम आपको मिलेंगे। Good afternoon, sir. My name is Priyanshu from BSc Microbiology second year. So, मेरा क्वेश्चन है कि
कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जी। बट इवन इफ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, फिर जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, वो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज़ में लगा रहता है, हाँ। तो फिर उस टाइम पे जो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है वो तो लो होता ही होता है। ऊपर से फिर मेरे दिमाग में आता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उस चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। तो सर 2 क्वेश्चन है, पहला कि ये जो चंचलता है इसको मैं कैसे रोकूं, दूसरा चीज जो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो चुका है उसको मैं कैसे गेन करूं। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके दोनों प्रश्नों के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, हम हमेशा किसी दूसरे को या दूसरों को, उनकी जिंदगियों को हमेशा देखते रहते हैं, उन्हीं पर फोकस किए रहते हैं कि अब वो कैसा कर रही है, अब वो कैसा कर रहा है, और हमारा क्या अपना ऑथेंटिक स्वभाव है, मैं क्या चाहती हूं, मुझे क्या करना है, उस पर हमें फोकस, हमारा अपना पूरा फोकस नहीं रहता है। होता क्या है कि हम सबसे ज्यादा स्वयं को इग्नोर करते हैं। सारी ऊर्जा अपने पर केंद्रित करो। दूसरों को, जिंदगी को देखने पर आपको आकर्षण होता है कि मैं उसकी तरह करने लगूं, उसकी तरह करने लगूं, उसकी तरह करने लगूं, और स्वयं से ध्यान हट जाता है पूरी तरह। मेरा मानना सिर्फ इतना है, तुम सारी दुनिया को जाने दो चूल्हे भाड़ में, तुम सारा फोकस स्वयं पर करो। व्हाट यू नीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आत्मा की आवाज को सुनो, अपने पर फोकस करो। धर्म परम स्वार्थ है, और आत्म विकास तभी संभव होता है जब तुम आत्मा पर यानी स्वयं पर केंद्रित करती हो। स्वयं पर केंद्रित करो। ट्राई टू बी दाई ओन सेल्फ। तुम स्वयं क्या हो? तुम्हारे भीतर एक बीज है, और उस बीज को खिलने का अवसर दो। वही तुम्हारे भीतर आत्म विकास का माध्यम बनेगा, वही तुम्हारे भीतर का फूल खिलेगा। जब तुम्हारे भीतर का फूल खिलेगा, तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ बाहर अभिव्यक्त होगा। जब तुम स्वयं पर फोकस करोगे तो आप पाओगे कि दूसरों को फोकस कर तुम्हारे भीतर ही इतना अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अपने प्रति प्रेम पैदा होगा, अपने प्रति भरोसा पैदा होगा, और फिर तुमको जो देखेगा वही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। अभी तुम दूसरों के चक्कर में पड़ी रहती हो, इसलिए तुम्हारा चित्त जब 100 लोगों को देखोगे, 100 लोगों की तरह होने की कोशिश करोगी, तो फिर निश्चित रूप से तुम्हारी ऊर्जा सब में नष्ट होगी, और स्वयं के पास ऊर्जा उपलब्ध नहीं रहेगी। इसलिए जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, साइंस ऑफ माइंड पावर, साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग, ये तीनों आपकी ऊर्जा को भीतर से विकसित करती है, और आपको दे हेल्प यू इन बीइंग योरसेल्फ। ये जिन्होंने जिंदगी को जाना है, समझा है और सब कुछ पाया है जिंदगी से, उन्होंने एक ही बात कही है, किसी दूसरे के जैसा होने की कोशिश मत करो, बी दाइन ओन सेल्फ। तुम जिस लिए बनी हो उसी को खिलने दो, उसी को हो जाने दो। थैंक यू। Any other question? जी. Good afternoon, sir. Yes. Sir, my name is Atul Yadav. जी. And I am from BSc Biotechnology. Okay.
सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस सजेशन आपसे चाहिए हाँ कि सर पता तो हमें है कि ठीक है ये करो सही है, हाँ। ऐसे करो सक्सेस मिलेगा, हाँ बट सर इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस चीज़ों को कैसे फॉलो करें कंटिन्यूअस हाँ कि सक्सेस मिले। हाँ। तो सर सजेशन चाहिए बस। अच्छा, ये बहुत प्रीतिकर बात कही इस बच्चे ने कि क्या सही है ये भी मुझे पता है, क्या गलत है ये भी मुझे पता है, लेकिन जो करना चाहिए वो होता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो होते चला जाता है। तो तरीका क्या है कि मैं वही करूं जो हमें करना चाहिए और जो मुझे पता भी है कि करना चाहिए। और ये सबके जिंदगी की समस्या है। आपने बड़े हल्के ढंग से सुझाव मांगा है, लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन की समस्या है कि सत्य क्या है, करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए, ये पता है, लेकिन होता नहीं। वो कैसे होने लगे, इसके बारे में 2-3 बुनियादी बातें आपसे कहूँगा। पहली बात, इसीलिए ज़िंदगी में कहते हैं किसी को अपना मेंटोर या गुरु के रूप में ज़रूर रखना चाहिए, जो जीवन का, ज़िंदगी का अनुभव जिसके पास हो, अवश्य रखना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति करता क्या है, ऐसा व्यक्ति केवल आपको गाइड नहीं करता है कि ये सही है ऐसा कर लो, वो गलत है ऐसा मत करो। ऐसा व्यक्ति जो सच्चे अर्थों में गाइड या गुरु या मेंटोर होता है, वो जो करना चाहिए उसे करने के लिए आपको विवश कर देता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ रास्ता नहीं बताया कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उनको धक्के दे दे के सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। कितनी बार युद्ध छोड़कर भागने को हुए, लेकिन फिर इधर से उधर से, यहां से वहां से खींच खांच के उसी रास्ते पर लाकर पटक दिया जिस पर कि उन्हें चलना चाहिए। तो सच्चा गुरु, सच्चा गाइड, सच्चा मेंटोर जिंदगी में होना चाहिए। वो आपको सिर्फ रास्ता नहीं बताता, रास्ता तो गूगल भी बता देता है। लेकिन रास्ते पर चलने के लिए गुरु ही मजबूर कर सकता है, गूगल मजबूर नहीं करेगा। वो तो दिखा देगा, चाहो तो जाओ, चाहो तो न जाओ। एक बात। दूसरी बात ये कि रास्ते पर चलने के लिए आत्मसंकल्प होना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर, जिसको पता चल जाए कि मेरा रास्ता ये है, मैं तो युवा होने का लक्षण ही यही मानता हूं कि युवा सच्चे अर्थों में वही है जिसको पता चल जाए कि ये रास्ता सही है, तो उस रास्ते पर चलने की उसके भीतर हिम्मत हो। और जिस रास्ते का पता चल जाए कि ये रास्ता गलत है, उस रास्ते को छोड़ देने की हिम्मत हो। आप, लेकिन ये हिम्मत कैसे आती है? इस हिम्मत को लाने के लिए, शक्ति को लाने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए, स्वयं को विवश करने के लिए आत्मसंकल्प को मजबूत करना होता है। अब आप पूछेंगे आत्मसंकल्प को मजबूत कैसे करें? आत्मसंकल्प को मजबूत करने के 3 ही उपाय हैं। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। इन तीनों चीजों को समझो, तीनों का अभ्यास करो, इसी से आत्मसंकल्प मजबूत होगा और सही रास्ते पर चलने के लिए आपकी सारी ऊर्जाएं स्वतः सक्रिय हो जाएंगी, स्वतः तत्पर हो जाएंगी। नमस्कार सर। जी Just- जी सर। सर मेरा नाम डॉक्टर वरुण कुमार शर्मा है। Yes. मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का हूँ। यस डॉक्टर। सर बच्चों की तरफ से एक मेरा पॉइंट है, क्योंकि बच्चे बहुत से क्वेश्चन करते भी हैं, बहुत हाँ, से क्वेश्चन नहीं कह पाते। जी जी इन जनरल हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, जी, जी। ठीक है, लेकिन बच्चों की अच्छाई के लिए पेरेंट भी रेगुलर क्वेश्चन या फिर रेगुलर गाइडेंस करते हैं। जी। लेकिन
बच्चों के जो पेरेंट हैं उनकी फॉलो अप ये बच्चे नहीं ले पाते, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की अगर बोले या किसी थर्ड पर्सन का, तो उनका जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ओके, क्योंकि पेरेंट तो सबसे बड़े गुरु हैं। हाँ, ठीक है, पेरेंट से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं समझ में आती है। हाँ, 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 यस, तो इस वजह से ओके, वेरी ट्रू। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसा डॉक्टर साहब ने पूछा है कि पेरेंट्स तो सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली गुरु है, क्योंकि वह सिर्फ रास्ता ही नहीं बताते हैं, वह आपको प्रेम भी बहुत करते हैं और उनके प्राणों में छटपटाहट होती है कि आपका अधिक से अधिक भला कैसे हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई दूसरा आदमी आपको सुझाव दे दे तो जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स का सुझाव एक्सेप्ट करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। जहां तक मैं समझता हूं, पेरेंट्स में और बच्चों में एक मान्यताओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। बच्चे और माता पिता दोनों में जो ये 25-30 साल का गैप, उम्र का अंतर होता है कम से कम, यही सबसे बड़ी बाधा है। बच्चे एक तो मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, क्योंकि 24 घंटे उनके साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत साज लगते हैं। और दूसरी बात, बच्चे आजकल जो बाहर के संसार का प्रभाव है उनके चित्त पर इतना ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब, जितने भी संसाधन हैं, या बाहर का जगत है, या बाहर के जो जिन मित्रों को मिलते हैं रोज 24 घंटे देखते हैं, तो पेरेंट्स की मान्यताएं, पेरेंट्स के थॉट्स, इमोशंस और मान्यताएं कुछ हैं, बच्चों के थॉट्स, इमोशंस और मान्यताओं में काफ़ी गैप है। उस गैप के कारण जो माँ बाप कहते हैं उसको, और जो बच्चे जिन मान्यताओं को विकसित कर चुके हैं उनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए माँ बाप को भी जिद नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को भी अपनी समझ उन्हें देनी चाहिए। उसके बाद उनसे कहना चाहिए कि तुम समझदारी से अपने विवेक से निर्णय करो। लेकिन समस्या यही है कि विवेक तो इनके पास है नहीं और वो गलत निर्णय करेंगे हमेशा। इसलिए आपका, प्रोफेसर्स का, शिक्षण संस्थाओं का काम है कि इनके विवेक को जगाने की दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठाने चाहिए, कुछ सोच विचार करना चाहिए कि इनका विवेक कैसे भीतर से जागे। जब विवेक भीतर से जागेगा तो अपने विवेक के आधार पर ये काम करेंगे, ना किसी दूसरे व्यक्ति के गाइडेंस से करेंगे, ना माँ बाप के गाइडेंस से करेंगे। इनका विवेक इनका सबसे बड़ा गाइड होगा। और मैं नहीं चाहता कि ये पेरेंट्स के ब्लाइंड फॉलोअर्स बने या किसी दूसरे ज्ञान देने वाले के ब्लाइंड फॉलोअर्स बने। मैं चाहता हूं कि ये अपने विवेक को जगाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो माँ बाप गाइडेंस दे रहे हैं वो 100% सही हो। निश्चित रूप से उसमें भी कई तरह की विसंगतियां, वो अपनी मान्यताओं के आधार पर गाइडेंस दे रहे हैं। अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू परिवेश में पैदा हुए हैं, तो जो हिंदुओं की मान्यताएं हैं उन हिंदुओं की मान्यताओं के आधार पर ही उसे प्रशिक्षित करेंगे और कहेंगे कि अगर तुम टीका नहीं लगाओ तो टीका लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर दो तो वैसा करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि बाहर से चीज़ें थोपी जाएं। मैं नहीं चाहता कि इनको संस्कारित किया जाए एक डर में। मैं चाहता हूं कि इनके भीतर का विवेक जागे, और जब तक विवेक को जगाने के लिए इस दुनिया में काम नहीं किया जाएगा तब तक मनुष्यता अपने हाथों मारी जाएगी और मनुष्य अपना गला खुद घोट देगा, और वही होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं मनुष्य, हमारे विवेक को जगाने के लिए उसी का तो विज्ञान मैंने दिया है कि जिससे आप अपनी इनफाइनाइट हिडन पोटेंशियल को जगा सकें।
और उस विवेक को जगाने के लिए 3 विज्ञान मैंने दिया है, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। इन तीनों का अभ्यास करो, आपके भीतर से हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा होगा, आपके भीतर से बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट पैदा होंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मन से प्राणों से सुना, बहुत आनंदित हुआ मैं, और मेरी आकांक्षा है कि बार बार मैं आपके बीच आता रहूं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। Now I would request our HOD sir, Dr. Varun Kumar Sharma, to felicitate Sakshi Shree ji for his wonderful guidance with a memento. And I would also request Sakshi Shree ji to felicitate Dr. with a memento. Okay.